Very good afternoon, guys. I am here with one of my student. His interview is of National Housing Bank Assistant Manager. Okay, and he is from currently working in ESIC and earlier in Bank of Baroda as a clerical, and he is preparing for regulatory body exam. सूर्य, आप राजस्थान में पोस्टेड हैं और बेसिकली कहाँ से हैं? जी सर, मैं नागौर जिले से हूँ, राजस्थान। तो राजस्थान में ही नागौर जिले से हैं। ठीक है, मैं आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। Okay, may I come in, sir? Yes, please come. Thank you, sir. Good morning. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, as it is mentioned that you are earlier working in Bank of Baroda as a clerical staff and currently you are in ESIC. On which post? Sir, I'm working as UDC in ESIC, Upper Division Clerk. Okay, why you are shifted from BOB clerical to Upper Division Clerk? Both are approximately same post. Yes, sir, but when I shifted, there were multiple reasons. ESIC UDC was offering me a better salary, it was offering me a better posting, and it was offering me a work culture and work environment in a field which I was interested in working for. Like ESIC is basically a social security organization, and while working in Bank of Baroda, I kind of gained an interest in working in social security. So I felt ESIC is the right opportunity for me. Earlier than this NHB assistant manager interview, you are given any regulatory body exam interview? Yes, sir. I have given RBI's interview, Reserve Bank of India's interview for Grade B manager. Okay, what is the reason behind that, Surya, that you are not selected? Sir, I just cleared the mains with a margin, and I was left behind by 2 or 3 marks in the final selection. Okay, briefly introduce yourself. Yes, sir. My name is Surya Prakash Sharma. I belong to Nagaur district of Rajasthan. I have done my bachelor's in economics from University of Delhi. My hobbies are photography and reading about national and international affairs. My father is retired. He earlier had a business and then he switched to job. And my mother is a homemaker. Your father is retired from which organization? He was working for some private business. Okay. In Nagaland itself. Okay. Tell me who supervises the housing finance company and who regulates the housing finance company? Sir, National Housing Bank is the supervisor of housing finance companies, while Reserve Bank of India is the regulator of housing finance companies. Okay. You heard about that term is called Residex Index. Yes, sir. I am aware about Residex Index. What is Residex Index, Surya? Sir, it was the first official residential housing price index released by NHB in the year 2007. It measures the movement in the prices of residential housing in around 50 countries, 50 cities, sorry. Its base is 2017-18. The recent residence index, which was released a few months back, shows an increase in 8 major cities in the housing prices. It also shows an overall increase in 49 out of the 50 cities, while there was a decrease in only one city, which is Raipur. What do you want? Why do you want to work with NHB, National Housing Bank? Sir, as I said, I started gaining interest in social security while I was working in Bank of Baroda, and after I joined ESIC, I want to continue my work in the same field, as well as I have already mentioned that I also applied for regulatory body exams like Reserve Bank. So I also had an interest in regulation as well. What is your current profile? What is your current profile? My current profile is Upper Division Clerk, sir. Upper Division Clerk. In this, what you are doing in ESIC? I am working in the most important department, which is benefit department. We are directly dealing with the benefits that ESIC provides to the workers. To the government employee workers? No, sir, private employee workers whose salaries are below 21,000 rupees. Okay. Okay. Tell me something about history of National Housing Bank and what you know about motto and all regarding chairman, headquarter, logo and all. Yes, sir. National Housing Bank was established in the year 1987 under the National Housing Bank Act of 1988. So I guess I have reversed the years. So no issue. It was established as an apex financial institution to serve the housing needs of the population of the country. It had 3 major important roles when it was established: regulation and supervision, financing,
promotion and development. In the 2019, the regulatory powers were uh, given to Reserve Bank of India, and currently NHB just supervises the housing finance company. It also plays an important role in promotion and development of the housing finance sector, and it also is the grievance redressal in case of any complaints if individuals have towards housing finance companies. Okay. What is the main objective of NHB, Surya? So the main objective of NHB is to ensure a stable housing finance system and to ensure that it is well integrated with the entire financial system or the financial system like the banking and other institutions, and to provide affordable finance in the housing sector to companies, and to ensure that housing finance companies have a well established source of funds in times of crisis, and also ensure supervision of housing finance companies. Who regulates monetary policy? So monetary policy is regulated by Reserve Bank of India. Okay, RBI issue monetary policy on how many months? So it is issued on biannual basis, once in 2 months, Bi-monthly. bi-monthly. So bi-monthly. Okay, who is the monetary policy member? They are newly appointed by Government of India side. Yes, sir. 3 new members have been newly appointed by Government of India. One is Naresh Kumarji, Sri Naresh Kumarji. Sir, I am unable to recall the other. No issue. How can housing finance companies leverage technology to improve customer experience and operational efficiency? So like banks, housing finance companies can also use applications. Applications are a great trend right now. We have seen an immense expansion in the banking sector as well. We can also use something like UPI in the housing finance as well. A simplified application to know about the loan application, the requirements of documentation, the interest rate, and the housing finance companies can also use big data, the data that banks have with them. It can be used to provide customized loans based on the geographic regions. Like rural areas have a different requirement, northeast have a different requirement, the urban areas have a different requirement. So that's it. Okay. Next question is in Hindi. You will also give the answer in Hindi of some questions. जी सर. हाउसिंग फिनांस कंपनी जो हैं उनके पास जब कस्टमर लोन अप्लाई करने के लिए जाता है, ओके, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कस्टमर्स के पास एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग लोन फ्रॉम हाउसिंग फिनांस? So can I take a few seconds? Yeah. What are the typical challenges faced by customer applying for housing bank loan, okay, and how they can address it? You can say, Surya, that sir, first of all, they have the issue related to documentation, and they don't have the proper idea regarding the either repayment of the loan or the structure of the loan. So firstly, they have the problem regarding what are the documents they have to submit, they are come through which policy, which plans, and what is the installment rates and all, what they are asking, this type of question. Yeah, जी sir. Okay. How does RBI regulate NBFC like housing finance company? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम पे समय समय पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू करता है, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट होती है, लिक्विडिटी कवरेज की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास कितने लिक्विड फंड्स होने चाहिए, आप कितने टाइम तक डिपॉजिट रख सकते हो. जैसे कि अभी रिसेंट में आरबीआई ने नई गाइडलाइंस निकाली है, जिससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बाकी एनबीएफसीज के लेवल पे लाया गया है. क्योंकि अर्लियर क्या होता था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 10 साल तक के डिपॉजिट ले सकती थी, बट बाकी एनबीएफसीज बस 5 साल के ले सकती थी. तो रिसेंटली आरबीआई ने बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो एनबीएफसीज हैं उनको भी 5 साल की लिमिट सेट करी. ठीक है. लिक्विडिटी ओके, अब इंग्लिश या हिंदी आप पे डिपेंड करता है. डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. क्या क्या ट्रेंड एंड चैलेंजेस है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास अभी, अपने आप को एक्सप्लोर कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा? यस सर, जैसा कि मैंने नेशनल हाउसिंग बैंक के एनुअल रिपोर्ट में देखा कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में जो मेजर लोन्स हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं वो कमर्शियल बैंक हैं. ऑलमोस्ट 82% कमर्शियल बैंक ने दिए हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का शेयर बस 18% है. तो मतलब अपॉर्चुनिटीज है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास,
और वो अपॉर्चुनिटीज आपको जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ऑलमोस्ट 3 to 4% एक्सपोजर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से, तो हम उसे एक्सपांड कर सकते हैं। बाकी जैसे कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म लोन देती है। अब इससे क्या होगा, जो आरबीआई की नई रेगुलेशन है कि आप डिपॉजिट बस 5 साल तक ही ले सकते हो, तो इसमें ठीक है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच। आपके आप जहाँ वर्क कर रहे हैं अभी, आपका यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस आपको एनएचबी में कैसे हेल्प करेगा? यस सर, अभी जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ इसमें मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे काम हो रहा है उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। और जैसे कि एनएचबी की मेन क्राइटेरिया जिसमें वो वर्क करता है कि हाउसिंग फॉर ऑल, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी इशू है। और मैं अभी जिसमें डील कर रहा हूँ, अभी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आप लेकिन राजस्थान में ही पोस्टेड हैं, कल को हम मुंबई आपको पोस्टिंग कर दें या दिल्ली बुलाया है आपको दिल्ली भेज दें या कहीं और पोस्टिंग कर दें आरओ में, कैसे मैनेज करेंगे बेटा? सर मैं अपनी पोस्टिंग से बहुत खुश होता हूँ अगर मुझे कोई नई जगह की मिल जाती है, क्योंकि मैं उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ कि मैं नई जगह जाऊँगा, नई चीज़ें देख पाऊंगा, नई चीज़ें सीख पाऊंगा। क्योंकि जब भी मैं नई जगह जाता हूँ मुझे रियलाइजेशन होता है कि देखने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है। इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फूड हैबिट्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो वो सब एक्सप्लोर करने का अगर आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी में ही मिल रहा है मौका, तो उससे बेटर कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। ओके। आप मुझे ये बता दीजिए सूर्या कि अभी फिलहाल आप ईएसआईसी में हैं, ठीक है, जैसे और कल को आप एनएचबी में आ जाते हैं, आप ऑलरेडी बीओबी छोड़ चुके हैं, तो अब आगे कहाँ का प्लान है? सर आगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितना मुझे एक्सप्लोर करना था, जो एक राइट एज होती है एक्सप्लोर करने की, वो मैं कर चुका हूँ। अभी जैसे कि मेरी एज उसमें आ चुकी है कि एज लिमिट खत्म हो रही है मेरी, आई एम ऑलरेडी 29। तो बाय द टाइम नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आएंगे मैं एलिजिबल ही नहीं होगा। और अब मुझे लगता है कि एक टाइम आ चुका है सेटल होने का, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन पकड़ने का जो सोशल सिक्योरिटी में जैसे बोला और रेगुलेशन में भी काम कर रहा है, जिसमें मैं खुद को ग्रो कर सकूँ, बहुत पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो कर रहा हूँ और मेरा प्रमोशन भी होते रहे टाइम की। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, व्हाट इज शेल कंपनीज? शेल कंपनीज सर वो कंपनीज है जो कि यूजुअली यूज की जाती है, उनका कोई मतलब मेन वो नहीं होता वर्किंग, वो बस यूज की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एक्सवाइजेड बिजनेसमैन है, उसे यहाँ से कहीं और कोई उसने ब्लैक मनी के थ्रू पैसा इलीगल मीन से कमाया है, तो उसे वो शेल कंपनीज के थ्रू वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यू आर ए बीकॉम स्टूडेंट, व्हाट इज एंजल टैक्स? Angel tax, sir, I believe is the tax which angel investors have to pay when they invest in new startups and companies. What is banking reconciliation statement? Yes, a banking reconciliation statement is prepared by companies and organizations when there is a difference between their cash book and the bank passbook. For example, suppose an organization issues a check for 10,000 rupees. It has recorded in its cash book, but the check was not presented to the bank for withdrawal. So there would be a mismatch of 10,000 rupees. The banking reconciliation statement helps to identify such mismatches and reconcile for it. आप बैंक में जॉब भी कर चुके हैं, आपका बीकॉम भी है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? The profit and loss account is an account which shows the profit or loss of an business organization in the at the end of the financial period. For example, say March 31st the company का होता है, उसमें हम expenses, income वगैरह के रिकॉर्ड करके प्रॉफिट या लॉस बताता है वो अकाउंट। ओके, आपने सुना है जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद क्या सीक्वेंस है अकाउंट्स का? सर मुझे रफली याद आ रहा है, इफ यू परमिट आई कैन। या जनरल के बाद हिंट मैं ही दे देता हूँ, लेजर। ये सर जनरल के बाद लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर वी गो फॉरवर्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैंक में आप जॉब भी कर चुके हैं और आपको पता भी होगा, एक टर्म है सरफेसी एक्ट और प्रोविजनिंग, इस दोनों को बताएं, व्हाट इज प्रोविजनिंग और व्हाट इज सरफेसी एक्ट? सर प्रोविजनिंग इज काइंड ऑफ अ फंड फ्रॉम द प्रॉफिट जो बैंक अपने पास रखती है, जो कि उनके लोन्स जो भी बैंक ने दिए हैं उस पीरियड में या उससे पहले वाले पीरियड में,
अलग अलग रिस्क वेट्स होते हैं उन लोन्स के, बैंक के जो एसेट्स हैं लोन उनके, तो उसका कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास प्रोविजन रखना पड़ता है, ताकि इन केस अगर कल इन फ्यूचर वो एनपी हो जाए या बैड डेट में कन्वर्ट हो जाए तो बैंक के पास एक सेफ्टी कुशन रहे, जिससे बैंक को ज़्यादा नुकसान ना हो। और सरफेसी एक्ट सर सिक्योरिटाइजेशन के लिए फाइनेंशियल एसेट्स का, इसके अंडर हम जो भी मान लीजिए जैसे मोर्गेज बैक लोन्स देते हैं उनको बैंक अपने अंडर ले सकते हैं इन केस ऑफ एनपी, अगर एनपी होता है लोन तो सरफेसी एक्ट यूज करके हम वो प्रॉपर्टी या लैंड जो भी है बैंक अपने पास लेती। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, व्हाट इज योर क्वालिटी सो दैट वी विल सेलेक्ट यू, और आप अपने जॉब का एक्सपीरियंस को एनएचबी में कैसे यूज करेंगे? जी सर, क्वालिटी सर जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बिकॉज आई वर्क इन पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें मैं 200 से 250 लोग अलग अलग तरह के हर विद इन मिनट्स डील कर रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो उसके कारण मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बस सुनने से सॉल्व हो जाती है, वो है मेरे पास। उसके बाद जैसे कोविड में मैं बैंक में था, तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन आती है जब आपको सुनना पड़ता है, कोविड में आपको समझाना भी पड़ता है लोगों को कि कैसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, उसमें आपकी ही भलाई है। तो लोगों को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझाना, वो स्किल्स मेरे पास बहुत अच्छी है। और जो एक स्किल्स मैं मानता हूँ कि जो मेरा सोशल सिक्योरिटी की तरफ इंटरेस्ट है, वो मैं मानता हूँ किसी के पास अगर पहले से है ना, इट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अगर आप किसी को नए तरीके से सिखाने जाओगे हो, क्योंकि वो चीज़ एक इनहेरेंट होती है, तो वो अलग क्वालिटी। अगर वो सिखाने जाओ तो वो एक अलग चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकली लिटरली खुद को एवरी टाइम पुश करना पड़ता है। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। राउंड अबाउट 16 मिनट 17 मिनट हो चुका है, अब आगे ही जा रहा है। ओके, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर इंटरव्यू के लिए। डेट जल्दी आने वाले हैं, वेट मत कीजिए। वर्किंग है आपको वीकडेज पे, लेट इवनिंग पे, ओके, आपके छुट्टी पे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कभी भी मैं स्लॉट्स दे दूंगा, आप मॉक ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।